नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में हम गद्य भाग से प्रश्नों को पढ़ेंगे। गद्य भाग का पहला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम और इससे पहला प्रश्न है काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथः कः रचितवान्। यह भी बोधमूल प्रश्न है। काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथः कः रचितवान्। उत्तर काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथः राजशेखरः रचितवान्। दूसरा प्रश्न पाटलिपुत्रस्य वैभवं कस्य नृपस्य समय सुतरां समृद्धम् आसीत्। उत्तर पाटलिपुत्र नगरस्य वैभवम् अशोकस्य नृपस्य समये सुतरां समृद्धम् आसीत्। प्रश्न 3 पाटलिपुत्रं कुत्र अवस्थितमस्ति अथवा पाटलिपुत्रं कस्याः तटे अवस्थितः अस्ति। यह भी बोधमूल प्रश्न है। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रं गंगा नद्याः तटे अवस्थितमस्ति। प्रश्न 4 गांधी सेतु कुत्र अस्ति। उत्तर गांधी सेतु बिहार प्रान्तस्य राजधानी पाटलिपुत्रे अस्ति। प्रश्न 5 कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। यह बोधमूल प्रश्न है और 2013 में पूछा भी जा चुका है। इसका उत्तर होगा बिहार प्रान्तस्य राजधानी पाटलिपुत्रे अस्ति। छठा प्रश्न है पाटलिपुत्रस्य इतिहासः कति वर्षः परिमितः वर्तते। उत्तर पाटलिपुत्रस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्षं परिमितः वर्तते। प्रश्न 7 बुद्धकाले पाटलिपुत्रस्य नाम किम् आसीत्। उत्तर बुद्धकाले पाटलिपुत्रस्य नाम पाटलिग्रामः आसीत्। प्रश्न 8 पाटलिपुत्र नगरस्य पालिका देवी का। उत्तर पाटलिपुत्र नगरस्य पालिका देवी पतन देवी। अब दूसरा पाठ है अलस कथा। इससे पहला प्रश्न है वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। उत्तर वीरेश्वरो नाम मंत्री दरिद्रेभ्यः अलसेभ्यश्च स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। दूसरा प्रश्न भीषणं बुभुक्षाया अपि कः किमपि कर्तुं न क्षमते। उत्तर भीषणं बुभुक्षाया अपि अलसः किमपि कर्तुं न क्षमते। प्रश्न 3 विद्यापति कः आसीत्। उत्तर विद्यापति मैथिलकोकिलः महाकवि च आसीत्। प्रश्न 4 कं दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। उत्तर गृहलग्नं प्रवृद्धम् अग्निं दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। प्रश्न 5 कति पुरुषाः सुप्ताः आसन्। उत्तर 4 पुरुषाः सुप्ताः आसन्। प्रश्न 6 एकः पुरुषः किम् अवदत्। उत्तर एकः पुरुषः अवदत् यत् अहो कथम् अयं कोलाहलः अथवा कथमयं कोलाहलः। प्रश्न 7 मैथिलकोकिलः कः। उत्तर मैथिलकोकिलः महाकवि विद्यापति अस्ति। मैथिलकोकिलः महाकवि विद्यापतिः अस्ति। प्रश्न 8 पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथस्य रचनाकारः कः आसीत्। उत्तर पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथस्य रचनाकारः महाकवि विद्यापति आसीत्। प्रश्न 9 पुरुष परीक्षायां केषां महत्त्वम् अस्ति। उत्तर पुरुष परीक्षायां मानवगुणानां महत्त्वम् अस्ति। प्रश्न 10 अलसकथा कस्य ग्रंथस्य अंशविशेषः वर्तते। उत्तर अलसकथा पुरुष परीक्षा ग्रंथस्य अंशविशेषः वर्तते। प्रश्न 11 अलसकथायाः कथाकारः कः अस्ति। उत्तर अलसकथायाः कथाकारः मैथिलकोकिलः विद्यापति अस्ति।
प्रश्न 12, वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र अस्ति? और यह बोधमूल प्रश्न है। इसका उत्तर होगा वीरेश्वरो नाम मंत्री मिथिलायाम आसीत्। वीरेश्वरो नाम मंत्री मिथिलायाम आसीत्। प्रश्न 13, दानशीलः कः आसीत्? उत्तर, दानशीलः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। प्रश्न 14, का कथा व्यङ्गात्मिका अस्ति? उत्तर, अलसकथा व्यङ्गात्मिका अस्ति। प्रश्न 15, केषां सुखं दृष्ट्वा भोज्यं गृह्णन्ति? उत्तर, अलसानां सुखं दृष्ट्वा भोज्यं गृह्णन्ति। प्रश्न 16, के स्वजातीनां सुखं दृष्ट्वा धावन्ति? उत्तर, जन्तवः स्वजातीनां सुखं दृष्ट्वा धावन्ति। प्रश्न 17, केषां कारुणिकः शरणदः या अलसानां कः शरणदः? यह भी बोधमूल प्रश्न है। इसका उत्तर होगा अलसानां कारुणिकः शरणदः। गद्य भाग का तीसरा पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। उससे पहला प्रश्न, का प्रथम कल्पा वर्तते? उत्तर, विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। प्रश्न 2, आधुनिक लेखिकासु का प्रसिद्धा? उत्तर, आधुनिक लेखिकासु पंडिता क्षमाराव प्रसिद्धा वर्तते। प्रश्न 3, ग्रामज्योति का लिखितवती? उत्तर, ग्रामज्योति पंडिता क्षमाराव लिखितवती। प्रश्न 4, का चंद्रादित्य राज्ञी आसीत्? उत्तर, विजय भट्टारी का चंद्रादित्य राज्ञी आसीत्। प्रश्न 5, कस्य पत्नी दार्शनिक रुचि मति रूपेण वर्णिता? उत्तर, याज्ञवल्क्य कस्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। और यह बोधमूल प्रश्न है। प्रश्न 6, तिरुमलाम्बा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवती? तिरुमलाम्बा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवती? उत्तर, तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य रूपम रचना कृतवती। प्रश्न 7, गंगादेवी किम महाकाव्यम अरचयत्? उत्तर, गंगादेवी मधुरविजयम महाकाव्यम अरचयत्। प्रश्न 8, विपुलं संस्कृत साहित्यम कयः संवर्धितम्? यह बोधमूल प्रश्न है। उत्तर, विपुलं संस्कृत साहित्यम शास्त्रकारैः संवर्धितम्। विपुलं संस्कृत साहित्यम शास्त्रकारैः संवर्धितम्। नौवां प्रश्न है, ऋग्वेदे कति ऋषिकाः आसन्? उत्तर, ऋग्वेदे 24 ऋषिकाः आसन्। प्रश्न 10, जनकस्य सभायां शास्त्रार्थकुशला का? उत्तर, जनकस्य सभायां शास्त्रार्थकुशला गार्गी आसीत्। प्रश्न 11, दार्शनिका का महिला आसीत्? यह बोधमूल प्रश्न है। इसका उत्तर होगा दार्शनिका मैत्री महिला आसीत् या दार्शनिका याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत्। प्रश्न भाग पाठ 4 है यहाँ, और यह गद्य भाग का चौथा पाठ है, भारतीय संस्काराः। पहला प्रश्न है इसे, पुरा कः वेदारंभम गुरुगृहे करोति स्म? उत्तर, पुरा शिष्यः वेदारंभम गुरुगृहे करोति स्म। प्रश्न 2, अंत्येष्टि संस्कारः कदा संपाद्यते? यह बोधमूल प्रश्न है और 2013 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा अंत्येष्टि संस्कारः मरणादंतरम संपाद्यते। प्रश्न 3, पुंसवनम संस्कारः कदा क्रियते? उत्तर, पुंसवनम संस्कारः
जन्मतः पूर्वं क्रियते। पुंसवनं संस्कारः जन्मतः पूर्वं क्रियते। प्रश्न 4, जन्मतः पूर्वं कति संस्काराः भवन्ति? उत्तर, जन्मतः पूर्वं 3 संस्काराः भवन्ति। प्रश्न 5, शैक्षणिकाः संस्काराः कति भवन्ति? उत्तर, शैक्षणिकाः संस्काराः 5 भवन्ति। प्रश्न 6, शैशवे कति संस्काराः सन्ति? उत्तर, शैशवे 7 संस्काराः सन्ति। प्रश्न 7, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे भवति? उत्तर, सप्तपदी क्रिया विवाहे संस्कारे भवति। अगला पाठ है कर्मवीर कथा और यह गद्य भाग का 5वां पाठ है। इससे पहला प्रश्न है, शिक्षकः कम शिक्षितुम् आरभत? उत्तर, शिक्षकः दलित बालकं शिक्षितुम् आरभत। प्रश्न 2, कस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रप्रशासने च दृश्यते? उत्तर, रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रप्रशासने च दृश्यते। प्रश्न 3, नवीनदृष्टिसम्पन्नः शिक्षकः कुत्र समागतः? उत्तर, नवीनदृष्टिसम्पन्नः शिक्षकः प्राथमिकविद्यालये समागतः। प्रश्न 4, लक्ष्मीः कीदृशजनम् उपैति? उत्तर, लक्ष्मीः उद्योगिनं पुरुषसिंहजनम् उपैति। प्रश्न 5, कस्य ग्रामस्य नाम भिखन्तोला अस्ति? उत्तर, रामप्रवेशस्य ग्रामस्य नाम भिखन्तोला अस्ति। प्रश्न 6, का द्रष्टुं शिक्षकः आगतः? या भिखन्तोला द्रष्टुं कः आगतः? उत्तर, भिखन्तोलां द्रष्टुं शिक्षकः आगतः। प्रश्न 7, कः केन्द्रीय लोकसेवा परीक्षायाम् उन्नतं स्थानमवाप? उत्तर, रामप्रवेशरामः केन्द्रीय लोकसेवा परीक्षायाम् उन्नतं स्थानमवाप। पाठ 6, स्वामी दयानन्दः। इससे पहला प्रश्न है, कं विहाय मूलशङ्करः गृहं गतः अथवा रात्रिजागरणं विहाय मूलशङ्करः कुत्र गतः? उत्तर, रात्रिजागरणं विहाय मूलशङ्करः गृहं गतः। प्रश्न 2, के विग्रहार्पतानि द्रव्याणि भक्षयन्ति? के विग्रहार्पतानि द्रव्याणि भक्षयन्ति? उत्तर है इसका, मूषकाः विग्रहार्पतानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। मूषकाः विग्रहार्पतानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। प्रश्न 3, आर्यसमाजस्य स्थापना कदा अभवत्? उत्तर, आर्यसमाजस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत्। प्रश्न 4, स्वामी दयानन्दः कः आसीत्? उत्तर, स्वामी दयानन्दः आर्यसमाजस्य संस्थापकः समाजसुधारकः च आसीत्। प्रश्न 5, कस्य जन्म गुजरात प्रान्तस्य टङ्कारा नामके ग्रामे अभवत्? उत्तर, स्वामिनः दयानन्दस्य जन्म गुजरात प्रान्तस्य टङ्कारा नामके ग्रामे अभवत्। प्रश्न 6, के हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मान्तरं स्वीकृतवन्तः? उत्तर, अनेके दलिताः हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मान्तरं स्वीकृतवन्तः। प्रश्न 7, सत्यार्थप्रकाशः कस्य रचना आसीत्? यह बहुत मुद्दल प्रश्न है। उत्तर, सत्यार्थप्रकाशः स्वामी दयानन्दस्य रचना आसीत्। पाठ 7, व्याघ्रपथिक कथा। इससे पहला प्रश्न है, कः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे वृते? उत्तर, व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे वृते। प्रश्न 2, व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् खण्डात् संकलितः? उत्तर, व्याघ्रपथिक कथा मित्रलाभ नामक
खंडात संकलितः। व्याघ्रपथिक कथा मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। प्रश्न 3 कस्मिन् कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः? उत्तर व्याघ्रपथिक कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रश्न 4 केषां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं भवति? उत्तर पशुपक्षिकथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं भवति। प्रश्न 5 कस्य हस्ते सुवर्णकङ्गनम् आसीत्? उत्तर व्याघ्रस्य हस्ते सुवर्णकङ्गनम् आसीत्। प्रश्न 6 कः वंशहीनः आसीत्? उत्तर व्याघ्रः वंशहीनः आसीत्। प्रश्न 7 व्याघ्रः किं दातुम् इच्छति? यह प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा व्याघ्रः सुवर्णकङ्गनम् दातुम् इच्छति। प्रश्न 8 व्याघ्रः किम् आसीत्? उत्तर व्याघ्रः दुराचारी आसीत्। प्रश्न 9 कः महापङ्के निमग्नः अभवत्? उत्तर पथिकः महापङ्के निमग्नः अभवत्। प्रश्न 10 केन धर्मशास्त्राणि अधीतानि? उत्तर व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि अधीतानि। प्रश्न 11 का कथा हितोपदेशात् ग्रन्थात् उद्धृतः अस्ति? उत्तर व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेशात् ग्रन्थात् उद्धृतः अस्ति। पाठ 8 विश्व शांति। इससे पहला प्रश्न है बलपूर्वकं कः निवारणीयः? उत्तर बलपूर्वकं स्वार्थोपदेशः निवारणीयः। प्रश्न 2 अनेकेषु राज्येषु परस्परं किं प्रचलति? उत्तर अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। प्रश्न 3 अशान्तेः कारणं कया चिन्तनीयौ? उत्तर अशान्तेः कारणं सावधानतया चिन्तनीयौ। प्रश्न 4 अशान्तेः कति कारणम्? उत्तर अशान्तेः कारणं द्वयं द्वेषः असहिष्णुता च। प्रश्न 5 काम विना ज्ञानं भारः? काम विना ज्ञानं भारः? उत्तर क्रियां विना ज्ञानं भारः। प्रश्न 6 कः असहिष्णुतां जनयति? उत्तर द्वेषः असहिष्णुतां जनयति। प्रश्न 7 अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति? उत्तर अद्य विध्वंसकानि अस्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति। अद्य विध्वंसकानि शास्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति। अब द्रुत पाठ से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है गीत गोविंदस्य रचयिता कः आसीत्? उत्तर गीत गोविंदस्य रचयिता महाकविः जयदेवः आसीत्। प्रश्न 2 कस्य कीर्तिः देशे सर्वत्र प्रसृता आसीत्? उत्तर महाकवि जयदेवस्य कीर्तिः देशे सर्वत्र प्रसृता आसीत्। प्रश्न 3 जयदेवस्य किं कर्तयित्वा कूपे क्षिप्तवन्तः? उत्तर जयदेवस्य पाणिपादं कर्तयित्वा कूपे क्षिप्तवन्तः। प्रश्न 4 जयदेवस्य औदार्यं कथा या का शिक्षा प्राप्यते? उत्तर जयदेवस्य औदार्यं कथाया प्राप्यते यत् वयं दुष्टान् शत्रून् प्रति अपि उपकारं कुर्वेम। प्रश्न 5 कस्य मोहः भयंकरः भवति? यह बोधमोदल प्रश्न है। इसका उत्तर होगा संसारस्य मोहः भयंकरः भवति। प्रश्न 6
नृसिंहस्य प्रियः भक्तः कः आसीत्? उत्तर नृसिंहस्य प्रियः भक्तः प्रह्लादः आसीत्। प्रश्न 7 पशुपक्षिणः कस्मिन् विषये रताः आसन्? उत्तर पशुपक्षिणः स्वस्य परिवारपोषणे रताः आसन्। प्रश्न 8 प्रह्लादः किम् अयाचत? उत्तर प्रह्लादः अयाचत यत् सर्वप्राणिनां कृते वैकुण्ठः व्यवस्था भवेत्। प्रश्न 9 प्राणिः कुत्र मग्नाः सन्ति? उत्तर प्राणिः स्वस्य एव कुटुम्बिकव्यापारे मग्नाः सन्ति। प्राणिनः स्वस्य एव कौटुम्बिकव्यापारे मग्नाः सन्ति। प्रश्न 10 कुत्र भोजनस्य समस्या नास्ति? वैकुण्ठे भोजनस्य समस्या नास्ति। प्रश्न 11 वैकुण्ठे किम् आसीत्? उत्तर वैकुण्ठे अनन्तः आनन्दः आसीत्। प्रश्न 12 कः अतिसुन्दरः आसीत्? उत्तर कश्चन राजकुमारः अतिसुन्दरः आसीत्। प्रश्न 13 किं न स्थिरम्? उत्तर सौन्दर्य न स्थिरम्। किं न स्थिरं? सौन्दर्यं न स्थिरम्। प्रश्न 14 किं स्थिरम् अस्ति? उत्तर यशः स्थिरम् अस्ति। प्रश्न 15 गोदावरी कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? गोदावरी महाराष्ट्रप्रदेशे अस्ति। प्रश्न 16 नासिकक्षेत्रं कुत्र वर्तते? नासिकक्षेत्रं महाराष्ट्रप्रान्ते वर्तते। प्रश्न 17 केन शूर्पणखायाः नासिकाः छिन्ना? उत्तर लक्ष्मणेन शूर्पणखाया नासिका छिन्ना। प्रश्न 18 कति वर्षेषु कुम्भमेलायाः आयोजनं भवति? उत्तर 12 वर्षेषु कुम्भमेलायाः आयोजनं भवति। प्रश्न 19 रामकुन्दः कुत्र अस्ति? उत्तर रामकुन्दः नासिकक्षेत्रे अस्ति। प्रश्न 20 नासिकक्षेत्रे कस्य मन्दिरं प्रसिद्धम् अस्ति? उत्तर नासिकक्षेत्रे त्र्यम्बकेश्वरमन्दिरं प्रसिद्धम् अस्ति। प्रश्न 21 सीतागुहा कुत्र अस्ति? उत्तर सीतागुहा पञ्चवट्याः पुरतः अस्ति। प्रश्न 22 पञ्चरत्नेश्वरस्य महालिङ्गं कुत्र अस्ति? उत्तर पञ्चरत्नेश्वरस्य महालिङ्गं पञ्चवटी गुहायाम् अस्ति। प्रश्न 23 विश्वधर्म सम्मेलनं कदा अभवत्? उत्तर विश्वधर्म सम्मेलनं 1893 ईस्वी वर्षे अमेरिका देशे अभवत्। प्रश्न 24 अर्धरात्रौ विवेकानन्दः किं कृतवान्? उत्तर अर्धरात्रौ विवेकानन्दः रोदनं कृतवान्। प्रश्न 25 के दुःखदारिद्र्यपूर्णं जीवनं यापयन्तः? उत्तर असंख्य भारतीयाः दुःखदारिद्र्यपूर्णं जीवनं यापयन्तः अथवा यापनं कुर्वन्ति। प्रश्न 26 विवेकानन्दः कस्मिन् सम्मेलने भागं गृहीतवान्? विवेकानन्दः कस्मिन् सम्मेलने भागं गृहीतवान्? उत्तर विवेकानन्दः विश्वधर्मसम्मेलने भागं गृहीतवान्। प्रश्न 27 कः कृपणः आसीत्? उत्तर कश्चन वणिक्कृपणः आसीत्। प्रश्न 28 ग्रामप्रमुखः कया सन्तुष्टः अभवत्? उत्तर ग्रामप्रमुखः सत्यनिष्ठया
सन्तुष्टः अभवत्। प्रश्न 29 मिथ्यारोपण का हतप्रभा जातः। उत्तर मिथ्यारोपण वृद्ध महिला हतप्रभा जातः। मिथ्यारोपेण वृद्ध महिला हतप्रभा जाता। प्रश्न 30 पंडितस्य कन्या कीदृशी आसीत्। उत्तर पंडितस्य कन्या सर्वगुणसम्पन्ना च आसीत्। प्रश्न 31 ब्राह्मणकन्या किं प्रतिज्ञां कृतवती। उत्तर यः शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठः च भविष्यति सः एव मम पतिः भविष्यति इति सा प्रतिज्ञां कृतवती। प्रश्न 32 विधानचन्द्ररायः कः आसीत्। उत्तर विधानचन्द्ररायः एकः महान् राजनीतिज्ञः चिकित्सकः पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री च आसीत्। प्रश्न 33 कस्याः रक्षणे एकस्य वर्षस्य हानिः न महति। उत्तर सत्यप्रियतायाः रक्षणे एकस्य वर्षस्य हानिः न महति। प्रश्न 34 दुर्गादासः कः आसीत्। दुर्गादासः बुद्धिमान् एकस्य ग्रामस्य युवकः आसीत्। प्रश्न 35 कस्य समय प्रज्ञां साधितवन्तः। कस्य समय प्रज्ञां साधितवन्तः। उत्तर दुर्गादासस्य समय प्रज्ञाः साधितवन्तः। प्रश्न 36 कस्य द्वौ पत्न्यौ आस्ताम्। कस्य द्वे पत्न्यौ आस्ताम्। उत्तर उत्तानपादस्य द्वौ पत्न्यौ आस्तां सुनीतिः सुरुचिश्च। प्रश्न 37 सुरुचेः पुत्रस्य नाम किम् आसीत्। उत्तर सुरुचेः पुत्रस्य नाम उत्तमः आसीत्। प्रश्न 38 ध्रुवस्य मातुः नाम किम् आसीत्। उत्तर ध्रुवस्य मातुः नाम सुनीतिः आसीत्। प्रश्न 39 विमात्रा अनादृतः कः दुःखितः अभवत्। उत्तर विमात्रा अनादृतः ध्रुवः दुःखितः अभवत्। प्रश्न 40 ध्रुवः तपः कर्तुं कुत्र आगतवान्। उत्तर ध्रुवः तपः कर्तुं मधुवने गतवान्। प्रश्न 41 ध्रुवः किं प्राप्तवान्। ध्रुवः किं प्राप्तवान्। उत्तर ध्रुवः भगवतः प्रसादात् अचलम् उच्चस्थानं प्राप्तवान्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें। यह 2011 में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति। उत्तर पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति। दूसरा प्रश्न है मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्। उत्तर मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। तीसरा प्रश्न याज्ञवल्क्यस्य पत्नी कः आसीत्। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत्। उत्तर याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी आसीत्। प्रश्न 4 जयदेवः कः आसीत्। उत्तर महाकविः जयदेवः गीतगोविन्दम नामक ग्रंथस्य रचयिता आसीत्। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दें। यह 2012 में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न कक्षायां कः प्रविशति।
उत्तर शिक्षकः। दूसरा प्रश्न, के सादरम् उत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति? उत्तर छात्राः। तीसरा प्रश्न है, वेदस्य कति अंगानि भवन्ति? उत्तर 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, भोः पंथाः इदं डैश गृह्यताम्? सुवर्ण कंगनम। दूसरा प्रश्न, व्याघ्रः डैश प्रसार्य दर्शयति? हस्तम। अगला प्रश्न है, कस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरमस्ति? यह 2013 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा बिहारस्य प्रान्तस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरमस्ति। दूसरा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाशः कस्य रचना अस्ति? उत्तर सत्यार्थ प्रकाशः स्वामी दयानन्दस्य रचना अस्ति। तीसरा प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कारः कदा सम्पाद्यते? इसका उत्तर है अंत्येष्टि संस्कारः मरणोपरान्तर सम्पाद्यते। प्रश्न 4, व्याघ्रः किं दातुम् इच्छति? इसका उत्तर है व्याघ्रः सुवर्ण कंगनम दातुम् इच्छति। अब एक पद में उत्तर देना है। पहला पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। इससे पहला प्रश्न है, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था सम्पन्नः आसीत्? चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले। दूसरा प्रश्न, नगरस्य पालिका देवी का आसीत्? पतन देवी। गांधी सेतु कुत्र अस्ति? पाटलिपुत्र नगरे। प्रश्न 4, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानं पाटलिपुत्रे अस्ति? उत्तर राजा राममोहन रायस्य। प्रश्न 5, पाटलिपुत्र कस्याः तटे अस्ति? उत्तर गंगायाः। प्रश्न 6, कुतनी काव्यस्य रचनाकारः कः? उत्तर दामोदर गुप्तः। प्रश्न 7, पाटलिपुत्र वैभवं पाठे कस्य नगरस्य वर्णनमस्ति? उत्तर पाटलिपुत्रस्य। प्रश्न 8, कस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रम् अस्ति? उत्तर बिहार प्रदेशस्य। प्रश्न 9, बुद्धकाले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम्? उत्तर पाटलिग्रामः। दूसरा पाठ है अलस कथा। पहला प्रश्न, मिथिलायां मंत्री कः आसीत्? अथवा मिथिलायां मंत्री कः? वीरेश्वरः। दूसरा प्रश्न, मैथिली कवि कः आसीत्? उत्तर विद्यापतिः। तीसरा प्रश्न, नीतिकाराः कं रिपुरूपं मन्यन्ते? उत्तर आलस्यम्। प्रश्न 4, कारुणिकं विना केषां गतिं नास्ति? कारुणिकं विना केषां गति नास्ति? उत्तर अलसानाम्। प्रश्न 5, कति पुरुषाः सुप्ताः आसन्? उत्तर 4। प्रश्न 6, अलसकथा पाठस्य लेखकः कः? उत्तर विद्यापतिः। प्रश्न 7, अलसकथा कस्य ग्रन्थस्य अंशविशेषः अस्ति? उत्तर पुरुषपरीक्षा ग्रन्थस्य। तीसरा पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिकाः। इससे पहला प्रश्न है, कस्य यानं पुरुषः नारीभिश्च चलति? उत्तर समाजस्य। प्रश्न 2, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा? उत्तर क्षमारावः। प्रश्न 3, शङ्कररचितस्य रचनाकारः कः? शङ्कररचितस्य रचनाकारः का? क्षमारावः। चौथा पाठ है भारतीय संस्काराः। इससे पहला प्रश्न है, भारतीय संस्काराः पाठे भारतस्य किं रचयति? उत्तर व्यक्तित्वम्। प्रश्न 2, संस्काराः प्रायेण कति विधाः सन्ति? उत्तर 5। प्रश्न 3, कति संस्काराः भवन्ति? उत्तर 16। प्रश्न 4, अंत्येष्टि संस्कारः कदा भवति? उत्तर
मरणादंतरम। पांचवा पाठ है कर्मवीर कथा। इससे पहला प्रश्न है कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। उत्तर दलितस्य। दूसरा प्रश्न भिखंतोला ग्रामे के निवसन्ति। उत्तर निर्धन जनाः। प्रश्न 3 दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्। उत्तर रामप्रवेश रामः। प्रश्न 4 भिखंतोलां द्रष्टुं कः आगत। उत्तर शिक्षकः। प्रश्न 5 कर्मवीरः सम्प्रति किं कार्यं करोति। उत्तर बिहार प्रान्तस्य केन्द्रप्रशासने। प्रश्न 6 कर्मवीरः उत्साहेन किं लभते। उत्तर महत्पदम्। प्रश्न पाठ 6 स्वामी दयानन्दः। इससे पहला प्रश्न है दयानन्दस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। उत्तर गुजरात प्रान्ते। प्रश्न 2 सत्यार्थप्रकाशः कस्य रचना अस्ति। उत्तर स्वामी दयानन्दस्य। प्रश्न 3 आर्यसमाजस्य स्थापना कदा अभवत्। उत्तर 1875 ईस्वी वर्षे। प्रश्न 4 स्वामी दयानन्दः कः। उत्तर आर्यसमाजस्य संस्थापकः। प्रश्न 5 कस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। उत्तर शुद्धतत्त्वज्ञानस्य। प्रश्न 6 समाजस्य शिक्षायाः उद्धारकः कः। उत्तर स्वामी दयानन्दः। अब 7वां पाठ है व्याघ्रपथिक कथा। इससे पहला प्रश्न है व्याघ्रपथिक कथायां कस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। उत्तर लोभस्य। प्रश्न 2 पशुपक्षी कथानां मूल्यं केषां शिक्षार्थं भवति। उत्तर मानवानां। प्रश्न 3 व्याघ्रस्य हस्ते किम् आसीत्। उत्तर सुवर्णकङ्गणम्। प्रश्न 4 दुराचारी कः आसीत्। उत्तर व्याघ्रः। प्रश्न 5 हितोपदेशस्य रचनाकारः कः। उत्तर नारायणपण्डितः। प्रश्न 6 व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः अस्ति। उत्तर हितोपदेशात्। प्रश्न 7 व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् खण्डात् संकलितः। उत्तर मित्रलाभ नामक खण्डात्। आठवां पाठ है विश्व शांति। इससे पहला प्रश्न है दुःखस्य विषयः किम् अस्ति। उत्तर सार्वभौमिकी अशांति। प्रश्न 2 शत्रुराज्यानि किं वर्धयन्ति। उत्तर लोभम्। प्रश्न 3 परपीडनं कस्मै जायते। उत्तर है इसका आत्मनाशाय। प्रश्न 4 क्रियां विना किं भारम। उत्तर ज्ञानम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल BSB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।